Hello viewers, welcome to Uron, Urologists on Air. So today we have a very renowned doctor, a very renowned urologist with us in conversation with. So before starting anything, I'd like to request you sir to please introduce yourself to the viewers. Hello everyone, myself Dr. Gaurav Mishra, Senior Consultant and Director, Patna Urogyne and Stone Hospital, located at Saguna Mode, Patna. Okay, sir. So my first thing will be related to BPH, which I think is a very common problem these days, and people are much aware about this problem. So I'll be asking a question related to this topic only. The first thing, what are the complications that could develop if BPH is not diagnosed at an early age? And the second thing, can you share a few instances that you have come across during your practice that may help in educating the viewers? Yeah, thank you for asking such a wonderful question. First of all, I am describing what is BPH. Yeah. Then I will explain what are the complications of BPH. So, Yes, sir. first of all, in every male there is a small walnut-shaped gland which is located just near to the close of bladder. That is the prostate gland. Its size is approximately 18 to 20 gram. And when the age increases, then size is also increases, and it causes the compression of urethra. That leads to the various symptoms such as poor urinary stream, intermittency, straining, and sometimes it may leads to the hematuria. So these are the most important symptoms of BPH. And if the patient does not manage properly, then it can be developed into the many complications, like patient may undergo into the chronic kidney failure. Yeah, it may leads to the bladder decompression symptoms, that bladder may become non-compliable. Okay. And there are so many symptoms, so many complications. So treatment of BPH is at the when the patients develop symptoms, then it is a treatable disease. Okay. So in your practice, what do you think was one of the most complicated cases related to BPH? Can you please explain that? Yeah, most complicated, most common complications of BPH is hematuria. Okay. Means hematuria means when the patient develop blood in his urine. जब पेशेंट को ब्लड आने लगता है तो ये सब पेशेंट ऐसे नहीं बताएंगे आपको. पेशेंट बोलेंगे कि मुझे पेशाब धीरे धीरे हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये हो सकता है कि ओल्ड एज का प्रॉब्लम है. बट उनको ये अगर दिक्कतें होती हैं तो उनको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है. और हम लोग अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने की नौबत ही नहीं आती. इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, कभी कभी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो काम करना बंद कर देता है. कई बार जो है पेशेंट किडनी फेलियर में आते हैं, वो किडनी फेलियर एक ही बार में आते हैं, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है. तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द BPH. Okay, sir. So my next thing will be kidney stone management. As you know, as we know that kidney stone is a major problem. So to deal with this, I would like to ask one of the question: what are the precautions that can effectively be taken to the patients to avoid kidney stone? So there are kidney stone is very common in our state, like Bihar. Okay. Yeah. So prevention is must. And so there are few important precautions we should taken, that we take plenty of water. I think we should take 3 to 4 liters of water, and avoid red meats, chicken, or green palak, cabbage. These are the important foods which contains high amount of oxalate. And oxalate increases the incidences of renal stone. So better to avoid these types of food habits, and start exercise, avoid junk foods, take plenty of water, and in your regular routine start morning exercise. It will always helpful for the patient, and it will prevent the stone formation. Okay, sir. So we would like to throw some insight on one more common problem, which is UTI, urinary tract infection.
So, sir, my next question is how is UTI and kidney stone related? Like in some cases, some of the patients suffer from both of them. So, can you please suggest some of the things or some of the cases where both of them were related and how to avoid? Yeah, so mostly in females, UTI is more common. Yeah, in very female. common. Yeah, Correct. yeah. And the renal stones, which is more common in females, is staghorn calculus and the triple phosphate stone, which is most commonly seen in the urinary tract infection patients, mostly UTI patients. So, early treatment of UTI is also a treatment for the stone prevention. Yeah. So, if a patient has a symptoms of UTI like increased frequency, urgency, nocturia, poor steams, and sometimes fever, So, then what is nocturia? nocturia means when the patient wake up at night more than 2 to 3 times, yeah, more than 3 to 4 To times. pass urine. Yeah, yeah, to Okay. pass urine, Yeah. and it disturbs his sleep. Sleep Yeah, cycle, then correct. it is called nocturia. Okay. So these are the symptoms. Sir, one more thing, there is a problem, overactive bladder. Yeah, yeah. So overactive bladder is a thing which leads to a person to become a very extrovert and anti-social person. So this is a problem that usually most of the people have at an old age. So how can you recommend something as a doctor to your patients to lead a more social and happy life? Yeah, so as your name suggests, is overactive bladder. Yeah, So overactive. yeah, These are the two terms, over and active. and active. या Yeah. सो कोई भी चीज अपने अगर काम से ज्यादा हाँ एक्टिव हो जाए Yeah. देन इट इज कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लैडर। पेशेंट के टर्म्स में जैसे मैं आपको जो मरीज मुझे सुन रहे हैं मैं उनको बताता हूँ, जैसे आपकी ब्लैडर है, यूरिनरी जो ब्लैडर है, जब आपका फुल होता है तो आपको ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि भाई आपका ब्लैडर फुल हो गया है और आप इसे एम्प्टी कर दो। ठीक है। बट इन ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट्स क्या होता है कि ब्लैडर एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। वो जैसे यूरिन 50 ml ही हुआ, 60 ml ही अगर ब्लैडर के अंदर हुआ, वो तुरंत ब्रेन को मैसेज कर देगा भाई जल्दी मुझे एम्प्टी करो। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज आर द मेन पैथोलॉजी इनसाइड द ब्लैडर व्हिच मे लीड्स टू द ओवर एक्टिव ब्लैडर। सो पेशेंट बोलते हैं मुझे जल्दी जल्दी पेशाब लग रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी, urgency and urge incontinence. Yeah. Urge incontinence. Sometimes patient when travels goes into the washroom and then it felt some urine leak. Yeah. So these are the most important things. So when it comes to social life, Yeah. the person becomes very introvert and he avoids such kind of events, social platforms. So how to manage that kind of situation? Yeah. So first of all, you must avoid straining, stress. Avoid. Yeah. These are the few important features that may leads to the overactive bladder. Okay. Such as if the patient is very tense about his duty. अगर मरीज जो है, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको बहुत जल्दी रहती है, Yeah. मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी से खाना खाना है, मुझे दिन भर काम करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा करना है, घबराहट में रहते हैं। और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने फूड हैबिट में वो कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना कि जो इस तरह का जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का कोई नोन कॉजेज नहीं है, बट दीज आर द ये रिस्क फैक्टर्स है जो कि उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अवॉइड करिए जंक फूड्स को। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी को बंद करिए, अपने डाइट में फाइबरस डाइट लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए और अवॉइड करिए स्ट्रेस और स्ट्रेन को। और अगर आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो आप उसको करेक्ट करिए। या डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आल्सो इज द रिस्क फैक्टर्स फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच करेक्ट योर ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो देख रहे होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली होगी और इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत कुछ पता चला होगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सो मच।